Namaste. Again, a very good evening from Breakthrough Higher Education. I'm Mrs. Manjusha Kelkar, and 9 o'clock is show time again. Yes, we all know that we have discussed many careers till date, and we are yet to discuss many careers. We will continue with yesterday's discussion. And in yesterday's discussion, people have asked that, are you going to discuss about these careers? Will you discuss about BDS, BMS, BHMS, nursing, etc.? So I thought, why not do this today or start with nursing as a topic? And there is a special thing today, and that is, it is International Nurses and Midwives Day, that is 12th May. So it is declared by WHO. It is so we respect and salute people working in this profession. It's of course a noble profession. All of us know that, and this profession has contributed a lot, a lot. But I think we have not given them their desired respect, or to this profession we have not honored. That's what I feel. And today also we can say that the person who started this nursing as a profession, Florence Nightingale, and Florence Nightingale's anniversary is also celebrated on this day. So it is very respectable day for all of us. And into the medical profession also we must always respect, because these are the people who are at the core level. Yes, hello, Asmita. These are the people at the core level who are actually in interaction with the patients 24 by 7. Because doctors, physicians, they come in round and then they go back, but the person who is continuously observing the patient is a nurse. And on this day, whereby, as I already told, that it's International Nurses and Midwives Day, we salute them. And in this age of COVID, these people are the front runner COVID warriors for us, for our nation, and as well worldwide. And therefore, with all due respect, along with the anniversary of Florence Nightingale, founder of modern nursing, we salute all these professionals. And now starting actually with what nursing is. So when I just started thinking about nursing as a profession, we must understand that this is a profession, as we discussed, which is in close contact with the patients 24 by 7. Sometimes it so happens, when I was once talking to a doctor, long story cut short, that he told me that we take advice from nurse when we are trying to treat a chronic patient, or a patient whose illness is not getting identified or not getting resolved. We have applied the brain, and we have thought about everything. We usually sit together with the nurse, the head nurse maybe, or the nurse who is actually taking care of the parent, and the insights which they share with us are very valuable for us. Because the education which they are taking is not a physician's education, but they have been taught well for their profession, and therefore it is of much value. And we put them in that position and then ask them or get their advice, what exactly you think should be done. Because along with the education, they have got experience of 10 years, 12 years, 20 years. Sometimes they are senior to even the physicians or the doctors out there. And I have seen, and I have talked to many interns. They say that, मैम हम लोग ना नर्स मैम जो होती है ना, हमारी वार्डन मैम, उधर जो हेड नर्स होते हैं ना, उनसे हम लोग जरूर बात करते हैं, उनसे हम लोग जरूर पूछते हैं, क्योंकि उनसे जो हमें इंसाइट मिलता है किसी भी डिसीज का, किसी भी पेशेंट का, और साथ में उनसे हमें ये भी एडवाइस मिलता है कि कौन से डॉक्टर का ट्रीटमेंट का क्या स्टाइल है और उसके साथ हमको कैसे अलाइन होना है। तो ये सारी इंसाइट्स हमको वो हेड नर्स से या नर्स मैम से मिल जाते हैं। सो मेनी अ टाइम्स दीज नर्सेस आर much senior with experience to the physicians also, and therefore it's a team.
the physician, the main consultant, the interns, the junior doctor, what we call, and the nurses. It's a team. If this works in a team, then it's for the betterment of the patient. So because ultimate motto of everyone out there is betterment of the patients. Having said that, अभी हम लोग आज नर्सिंग एज अ प्रोफेशन को ग्लोरीफाई करने के साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, नर्सिंग करियर क्या होता है और उसे कैसे परस्यू किया जा सकता है नर्सिंग करियर को। अभी एक रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ की, और ये पैंडेमिक के भी पहले आई हुई रिपोर्ट है। पैंडेमिक में तो ऑफ कोर्स ये जो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ वो ट्रू ही है, लेकिन 9 मिलियन नर्स की जरूरत है वर्ल्ड ओवर आज 2030 तक। 2030 तक अपने को वर्ल्ड ओवर 9 मिलियन एक्स्ट्रा नर्सेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, 9 मिलियन मोर नर्सेस आर रिक्वायर्ड बाय 2030। दैट्स अ डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट। और ये एक प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें एंटर करने से आपको सेटिस्फैक्शन, सर्विस का सेटिस्फैक्शन और बहुत सारी चीजें साथ में, पेमेंट्स, ये सारे पर्क्स, ये सब भी मिलता है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। अभी करियर रिलेटेड हम लोग बात करेंगे ही इसके साथ ही साथ। तो पहले हमने प्रोजेक्शन किया कि नर्सिंग प्रोफेशन क्यों करना चाहिए हमको, बिकॉज प्रोजेक्टेड रिपोर्ट ये कहती है कि इतने नर्सेस की हमें जरूरत पड़ने वाली है। और ये क्यों पड़ने वाली है? टू अटेन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हम जब किसी भी चीज को लॉन्च करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा क्या, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए हमको 2030 तक इतने नर्सेस की जरूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद जो एक ट्रेन नर्स होती है ना, वो she is a blessing. Sorry with the gender, but usually it's a female dominated area or female dominated specialization. We do have male nurses, but when we say a nurse, it's always a she sometimes. So but yes, very good male nurses are also there, and equally enter into the nursing profession nowadays. So trained nurses is one of the greatest blessing of humanity, taking place beside a physician and the priest. मतलब कहीं ऐसा इक्वेट किया है एक बहुत बड़े जो भी उधर आउट देयर फिलोसोफर थे, उन्होंने ऐसा कहा कि शी इज मिडवे बिटवीन फिजिशियन एंड अ प्रीस्ट। तो ये इम्पोर्टेंस है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन का। जो मॉडर्न नर्सिंग आज है, जैसा कि हमने बात किया, उसकी शुरुआत फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी। अभी हम देखते हैं करियर स्ट्रक्चर, मतलब इस प्रोफेशन में जाया कैसे जा सकता है। तो उसके लिए मुझे जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो एप्ट क्वेश्चन है, जिसका मैं आंसर देना चाहती हूँ कि क्या करते हैं, मतलब नर्सिंग कब करते हैं, किसके बाद करते हैं, क्या पढ़ने के बाद नर्सिंग किया जा सकता है, उसके लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है क्या, और उसके बाद हम क्या क्या करना चाहते हैं या क्या क्या कर सकते हैं। सो yes, yes, Asmita, USA से इन्होंने बात किया है, you'll find many Indian nurses in big well-known hospitals. Yes, absolutely true. Yes, Padmaja, good evening. Then Asmita is again saying in USA male nurses are common. Yes. So these are our viewers, and they usually come out here daily. Thank you for watching, and do spread it if you find correct. नाउ ओके, तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि ये नर्सिंग प्रोफेशन में हमको एंटर कैसे करना है। तो यूजुअली नर्सिंग प्रोफेशन ये 10+2 बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद आप एंटर कर सकते हैं। मतलब उसी लेवल पर जब आप फिजिशियन के लिए एंटर करते हैं इंडिया में, जब आप एमबीबीएस के लिए एंटर करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रही हूँ, उसी वक्त हम नर्सिंग प्रोफेशन में भी एंटर करते हैं। अभी नर्सिंग प्रोफेशन में जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने हाईलाइट किया था कि जैसे ये क्वेश्चन क्यों आता है इंडिया में स्पेशली, क्योंकि इंजीनियरिंग जो फील्ड है ना, उसमें ऐसा होता है कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं, फिर डिग्री कर सकते हैं, फिर आगे भी बढ़ सकते हैं, फिर डिप्लोमा से डिग्री में स्विच भी हो सकते हैं, और फिर उसके बाद आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो यस, इन द सिमिलर मैनर हम नर्सिंग में भी डिप्लोमा कर सकते हैं, बट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज 10+2। अभी इसमें क्या क्या हो सकता है? सो इट इज जीएनएम, एएनएम। अभी जीएनएम का मतलब क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, दैट इज जीएनएम। एएनएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो जब जीएनएम, एएनएम ये दो जो हैं ये डिप्लोमाज हैं, which I have highlighted there, that GNM and ANM are diplomas, and then BSc nursing is a degree. अब इसका ड्यूरेशन कितना होता है? तो ऑक्सिलरी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है वो 2 साल का है। ऑक्सिलरी मतलब 10+2 के बाद 2 years,
इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें आपने पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप लिया हुआ है तो वेल एंड गुड, बट आपने अगर ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स का फील्ड भी लिया हुआ है तो भी आप डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, एएनएम के लिए। जीएनएम के लिए बेसिक, और ये 2 साल का है एएनएम आपका। देन जीएनएम जो है उसमें आपका बेंटर हो सकता है अगेन 10+2, बट बायोलॉजी विद बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, मतलब साइंस स्ट्रीम से ही जाया जा सकता है इसमें। और ये यूजुअली इंडिया के पर्सपेक्टिव में 3.5 ईयर्स का होता है। So you are going for a diploma, both these are diplomas, and after that जैसे lateral entry engineering में possible है, वैसे जीएनएम से lateral entry बीएससी में भी possible है। काफी यूनिवर्सिटीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड देन यू एंटर इनटू बीएससी नर्सिंग। अब ये जो बीएससी नर्सिंग है अगेन बेसिक क्वालिफिकेशन हो गया आपका 10+2 with PCB as your subjects, and now for BSc nursing you require competitive exams. You have to appear for many competitive exams. अभी भी centralized नहीं हुआ है, जैसे इंडिया में MBBS centralized हो गया है, that it's only NEET through which you go into your MBBS. Similarly for nursing, if I talk about Maharashtra, then in Maharashtra, yes, we have decided, Maharashtra government has decided that all the nursing colleges will enter, or all the nursing colleges will consider NEET as the entry level score. And on the basis of NEET scores, you can enter into nursing profession. अभी ये हो गया बीएससी नर्सिंग का, जो कि एक डिग्री कोर्स है और जिसका ड्यूरेशन 4 years है। अभी ये डिप्लोमा कोर्सेज में भी, डिग्री कोर्सेज में भी, सब में इंटर्नशिप होता है। So that's the best part of it. So you can just think about the parallels. Nursing is not sometime और इसको बहुत बार लोग आया के साथ कंफ्यूज करते हैं क्या, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी इंडियन पर्सपेक्टिव में, बट इट इज नॉट सो। दे आर क्वालिफाइड, दे हैव बीन taught what they are doing. And then BSc nursing, these are the types of qualifications you can attend. अभी नर्सिंग में भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग यू कैन हैंडल इंडिपेंडेंटली, आप जाइए उधर ये मेडिसिन में चले जाइए, ये मेडिसिन में, ऐसा नहीं होता है। नर्सिंग में भी स्पेशलाइजेशंस ऑफर किए जाते हैं। डिप्लोमा लेवल पर थोड़ा लो लेवल का क्वालिफिकेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स क्या होंगे, मेंटल हेल्थ केयर, गायनेकोलॉजी, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं डिप्लोमा नर्सिंग के। और बीएससी नर्सिंग में और भी एडवांस कोर्स होते हैं, जैसे यू कैन स्पेशलाइज इन मेडिकल एंड सर्जरी, यू कैन स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक्स, मतलब आप पीडियाट्रिक नर्स स्पेशलाइज किया है आपने। बीएससी में आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स था, एनेस्थेसियोलॉजी था, साइकेट्री था, मेडिकल बता दिया मैंने, मेडिकल एंड सर्जरी था। तो ये स्पेशलाइजेशंस भी होते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में। इट्स नॉट दैट ओनली द फिजिशियंस डू देयर स्पेशलाइजेशन, द नर्सेस आर आल्सो स्पेशलाइज्ड, मतलब ओटी स्पेशलिटी नर्स भी होती है, who knows how to handle operation theater, whatever is going on out there. So these are the specialties. अभी करियर प्रोग्रेशन कैसे रहेगा फिर नर्सिंग में? तो अगर आपने एएनएम से ज्वाइन किया, मतलब लोअर लेवल से 2 साल का आपने डिप्लोमा किया, उसके बाद में थोड़ा आपको विवाह होके आप जीएनएम में चले गए, उसके बाद आपने बीएससी कर लिया, अब यहाँ तक आपने पढ़ाई करने के बाद नाउ यू कैन डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो. So it is MSc nursing, and then you can enter into teaching field. तो नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं, इसका मतलब इफ यू वांट टू गो इनटू टीचिंग प्रोफेशन यू हैव टू डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन नर्सिंग। इसके बाद पीएचडीज भी होते हैं, मींस सम नर्सेस आर रिसर्चर्स, so they do their research, they do their PhD in nursing faculty also. ये आपका करियर प्रोग्रेशन हो सकता है। सैलरीज आर गुड। अभी रोल क्या है वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, दैट इट्स इंटरमीडिएट बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर। अभी वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन और एडवाइस, ये वो दोनों को देती है, किसको और किसको, डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी, क्योंकि पेशेंट को भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। सपोज वी कैन इमेजिन अ सिनेरियो दैट अ पेशेंट इज लाइंग देयर ऑन द बेड एंड no relatives are there, so just doctor comes on the round, he looks at the patient, he talks to the patient, sometimes yes, sometimes no, and then he moves on. And after that what happens, you know, जब वो डॉक्टर चले जाते हैं उसके बाद पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, डॉक्टर क्या बोल रहे थे, किससे पूछेंगे डॉक्टर क्या बोल रहे थे, बिकॉज मेडिकल टर्मिनोलॉजी सारी नहीं समझती है, और वहां पर हम लोग डॉक्टर हमारे सामने ज्यादा बात भी नहीं करते, so they call the nurse and they ask कि वो क्या कह रहे थे डॉक्टर. So you are a interpreter and intermediator, because the nurse understands the medical language and she can tell that to the patient. So nurse many a times is a intermediator and an interpreter between the patient and the physician also. And जैसे कि पहले बात किया हमने, that she can give the advice to both of them, yes,
physicians as well as patients. So the profession itself is very important when we are talking about the patient care. एंड हाउ मेनी कॉलेजेस, जैसे मैंने बोला एंट्री लेवल्स क्या क्या हैं इसमें, तो अभी यूजुअली बहुत सारे कॉलेजेस अपनी अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स रखते हैं, लेकिन एम्स और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए अगर हम बात करें तो हमारे सारे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के लिए एंट्री लेवल जो है वो नीट है, और वैसे भी ऑल ओवर सारे प्राइवेट कॉलेजेस में नर्सिंग की जो एंट्री है दैट इज थ्रू नीट ओनली. So this is about the nursing profession, which is very important nowadays, and it was and it will be. And good and qualified nurses who are having patience, because it's a skill and a virtue you require for nursing profession to happen. So you must go through that and understand. और हमारे लिए क्या है, जो लोग नर्सिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं उनके लिए तो हमने बताया, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमको उनके प्रति कंपैशन रखना चाहिए, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर आउट देयर. वो पेशेंट्स के साथ कभी जस्ट इमेजिन कीजिए दैट a patient is not having his or her relatives with him, then हम क्या करते हैं, यूजुअली बाहर जाते समय बता कर जाते हैं कि हमारे पेशेंट का ध्यान रखिए. किसको बता कर जाते हैं? नर्स को बता कर जाते हैं. So we have to understand, we must be compassionate, we must be passionate about this particular profession which is out there, and it has been there for centuries. क्योंकि हमारे यहाँ तो मिडवाइफरी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफेशन हुआ करता था. जब फिजिशियंस या मेल डॉक्टर्स डिलीवरी नहीं करवाते थे तो उस वक्त ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन, और ये सालों से मतलब एवरी कल्चर हैज इट्स रूट इन नर्सिंग एज मिडवाइफरी. सबसे पहले मिडवाइफरी इज अ प्रोफेशन which is related to nursing. For ages we have been having this profession. It may be having different names according to different cultures, but yes, midwifery is a very important profession, has been going on. Nowadays these midwives who are at the village level, they have been called, or they are called, and they are trained, scientifically trained to do the same profession and send back to the villages. अभी ये लोग जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो राइट फ्रॉम आंगनवाड़ी से लेके इनका जॉब पोजीशन शुरू होता है. दीज पीपल कैन वर्क विद गवर्नमेंट, नॉट ओनली द हॉस्पिटल्स बट हेल्थ केयर सिस्टम्स. दे कैन बी इनटू द पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग. पॉलिसी मेकिंग मतलब बैक साइड में गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए किया जा सकता है. बिग बिग कारपोरेट हॉस्पिटल्स में तो लगते ही हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में तो नर्स लगते ही हैं. इसके अलावा they usually, or they many a times work as preventive healthcare professionals. क्योंकि हमने जैसे अभी देखा उनके जो सब्जेक्ट्स हैं which they have studied during their course duration, those subjects are all related to medicine. Maybe at a somewhat lower level than a MBBS doctor or a physician, but they have been taught the same subjects. So they are, or they are playing a very very important role as preventive healthcare professionals. And in this COVID situation, yes, it has gained tremendous importance. Yes, people are reacting very informative in USA. Nurse get, yes, very good payments. Yes, and the profession is highly respected out there in US, Asmita, as you are telling me. So it's great to have nurses being paid nicely, and NP, that's what they are called in US, nurse practitioners. हम लोग यहाँ पे सिर्फ नर्स बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं बहुत बार. There they are called as NPs, that is nurse practitioners. So what exactly yes, going back to the jobs and the professions where these people are working, as I told you, in the Anganwadi setting, small primary school, usually उसके अंडर 2-3 प्राइमरी स्कूल देके डिस्पेंसरी लेवल पर एक नर्स है, देन शी विल अटेंड टू स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम ऑफ द किड्स, शी विल गो फॉर हेल्थ चेकअप्स, व्हाट इज हैपनिंग, देन what doses you have taken. If there is a polio eradication drive, then help of these nurses are taken who are out there in the field. इसका मतलब नर्स सिर्फ वो चीज नहीं है या वो इंसान नहीं है जो हॉस्पिटल सेटिंग में मिलता है हमको. These can and these are working as preventive healthcare professionals also. Then they are also a big part in clinical research system.
When we are talking about clinical research, many a time, जैसे अभी वैक्सीन आया, अब इस वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए हम लोग जब क्लिनिकल रिसर्च सेटिंग में जाते हैं, तो there also nurses play a big role, because they are the people who administer all these things. It's not the other way around. Not always doctors are present everywhere. So nurse is a person who usually takes the charge. And plus, in case of any emergency, nurse is the person who understands if a doctor has to be called if it's a real emergency, because she understands the parameters. Maybe she is not giving the medication in totality, but she understands the parameters. Whatever parameter fluctuations are happening, especially in the ICU. So they are ICU specialized nurses. That means they are handling emergency situations there. And in emergency medicine also, there is a big role of nursing professionals out there. And therefore, this is a noble profession, as we have told. And to summarize all this, again, I would like to congratulate people working in this noble profession. And today being International Nurses Day, all the COVID warriors out there world over, we have high respect for you. And a big namaste. And with this, I end the session. Signing off, Manjusha Kelkar from Breakthrough Higher Education. Good night.